Great. So, hi guys. Very good evening to all of you. Uh, and this is Sahil Khanna. I am heading Genesis Educates. So, abhi itna hi introduction karte hain. Let's get back to the work. So, why this session? We wanted to understand that uh, how things have changed post COVID. I'll try to have a mixture of both Hindi and English. Will that be fine? हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करें. मैं आपको चैट की परमिशन दे देता हूं इनिशियली एंड ग्रेजुअली आई गिव यू मोर परमिशंस इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी. सो द चैट परमिशन इज ऑन. सो इनिशियली हम लोग मिक्स हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे. आई as far as most of you would be listening to me for the first time because most of you have just begun your journey with Genesis. The reason for this session is that we should know that parent and mentors should be on the common page, should be on the same page. I very strongly believe that कि एक बच्चे की ग्रोथ में जितना रोल हमारा है उससे कहीं ज्यादा आपका भी है. एंड इफ टुगेदर वी आर ऑन द सेम पेज देन आई थिंक ग्रोथ से ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता. सो आई वांटेड टू शेयर what I have learned in last 13 years of establishing Genesis. I started Genesis in 2009 when I was 22 years old. So in these 13 years of mentoring a lot of students, more than 7,000 students. So I'll only share my experiences and my way of handling the teenagers. As a parent, your experience is, I'm sure, more than my experience as a parent. But my experience of handling this age group is probably can be helpful for all of us. So we'll sit with an open mind. I'll do a very casual kind of an interaction with you. The only thing I required is people with open mind, because at the end of the day it's for your child. Can I expect full support in this? I would love to ask again, क्या मैं आप सबसे पूरी support expect कर सकता हूँ? Great. And and मैं बहुत इरिटेट भी करता हूँ ड्यूरिंग दिस सेशन. सो मैं किसी को सोने नहीं दूंगा, किसी को स्क्रीन छोड़ के जाने नहीं दूंगा. एंड ऑल्सो आई टेल द बच्चास कि आपके पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे नहीं कर रहे थे. सो अभी आई नॉट टेक एनी डाउट्स ऑल्सो राइट नाउ बिकॉज लेट्स स्टार्ट द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. देन आई टेक द डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन. So let's get started. So COVID ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया, and I'm sure that you realize that a lot of things have changed. I'll share what I've learned, what I've observed in last 20 odd days or 15 odd days with observing students very carefully, based upon the feedbacks I've got from my team. But before we start, आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस आएंगे. I want you to pay attention. आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस आएंगे जिसके एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं. There are multiple questions, there are two questions जिसकी ऑप्शंस आप एक से ज्यादा मार्क कर सकते हो स्क्रीन पे ही, which will help me understand you guys as a parent better. So I would request all of you to vote when I'll say now you can vote. Yes, you can see now there are two questions on your screen. So you can choose more than one answer. The first question says that as a parent, what are the top two things bothering you? First question में आपने कोई दो चीजें चूज करनी है. पहले first question आंसर करेंगे. As a parent, what are the top two things which are bothering you? आप सब देख सकते हैं ना स्क्रीन? Can all of you see the, yes, okay, the voting has started. And the second question is, what are your expectations from us? Again, now you can choose any number of options in question number 2. Question number 2 में जितनी मर्जी option choose कर सकते हैं. 1 में the only thing is I'm looking for top 2 things which are bothering you. Last 30 seconds, after 30 seconds I'll close the poll. जो आंसर नहीं कर रहे हैं, I can see जो आप आंसर नहीं कर रहे, आपकी शिकायत लगेगी आपके बच्चों को कि आपके पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते सेशन में.
बी रेस्ट एश्योर्ड दैट मैंने तभी बोला पेरेंट्स को सारे रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को रूम से थोड़ा सा साइड पे भेज दीजिए. इट हैज टू बी बिटवीन यू एंड मी टुडे. Okay, last 10 seconds, final 10 seconds, then we'll end this poll. If you have voted, great. If you have not voted, please vote. Okay, last 3 seconds. Final 3, 2, and 1. I'm closing this and I'll share the results right away with you so that we know हम सब किस boat में sail कर रहे हैं. Here are the results. Okay, let me just go through them. As a parent, what are the top 2 things bothering you? Excessive use of mobile, lack of clarity. Okay, the following very good, awesome. Okay, I want all of you to keep reading of the responses जो बाकियों ने भी लिखे हैं. What I explained, marks should improve. Okay, awesome, awesome. Shall I stop sharing? Have you got the gist of the results? आप सबने results देख लिए हैं? मैं बारी-बारी बोल रहा हूँ, बच्चों को दौड़ा दीजिए दूसरे कमरों में. कई बच्चे दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे पेरेंट्स के साथ, उनको छुपा दीजिए, उनको बोलो बैठ के नीचे छुप जाएं. They are not allowed. Okay. Now, okay, I am stop sharing the results. Now let इसी note से start करते हैं. Now what is happening here is, now I'll be very honest with you. Few of you have attended my session, so they know कि ऐसे जब मैं बात करता हूं, there is no filter when I talk. Now what we need to understand is what has happened is that COVID की वजह से, post COVID and online studies की वजह से, when I see students these days in my classrooms on camera, or when I go and visit any branch, I see them talking, walking, interacting with the teachers, and I take feedback from them. I actually feel very concerned. मुझे ऐसा लगता है a lot of damage has been done, and truthfully speaking, वो damage we might not see at the exterior level, but वो damage काफी हो चुका है, especially because of, and typically because of, last 2 years, approximately last 2 years. Now my only question to all of you is, and I'll be very honest, and I want very honest answers. क्या आप लोगों को genuinely लगता है that what has happened in last 2 years can be solved, rectified in a month or 2? Do you think so? 1 महीना, 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 महीने is sufficient to what you were expecting from us? I think what we need to understand is, हमें एक दूसरे के साथ बहुत सारी clear cut और strong expectations हैं. I'm sure you have a lot of expectations from us, and we would give our heart and soul as a team to live up to those. But I'll be very honest with you, I completely understand with what Meenakshi ma'am is saying. Deep down the heart, education does not work like allopathy. For a permanent improvement in a child, or for improvement to last longer than a temporary effort, we need time. And realistically, the kind of damage which has been done, I see student notebooks in the class, and teachers tell me that basic addition subtraction में भी band बज जाता है at times. And इसमें, with all due respect to your expectation, to your feelings, इसमें गलती बच्चे की नहीं है. Obviously it's easier said than done. हम ये बोल सकते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस चलती थी स्कूल की, बच्चे ने पूरी ऑनलाइन क्लासेस की, हमने लैपटॉप लेके दिया, हमने इंटरनेट वाईफाई लगाए लास्ट 2 सालों में. एग्रीड. एज अ पेरेंट आई एम श्योर आपने वो सब किया which was beyond your comfort zone. But imagine a child of, जब ये age group, we have called typically students of class 9th and 10th today in this session. Okay, and I think we invited around 90-100 parents. Approximately 30% of them have turned up. Okay sir, I'll speak more in Hindi. So मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, कुछ पेरेंट ने रिक्वेस्ट की है. So हमने 100 लोगों को approximately आज इनवाइट किया था, उसमें से 30 से 40 लोग के बीच में हैं.
तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो इश्यूज हैं वो एक हफ्ते में, 2 हफ्तों में इंप्रूव नहीं हो सकते। एंड अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हम लोग वो सारे पुराने पाप, हम इसको ऐसे वी पुट इट दिस वे, पुराने पाप जो इकट्ठे हो गए हैं उनको हम हफ्ते में 10 दिन में सॉर्ट आउट कर दें, आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ऐसा नहीं हो सकता। हमें टाइम चाहिए, एंड वो टाइम बच्चे को भी चाहिए। अब बच्चा क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ ये सेशन क्यों हुआ। इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेसिस, इतने सालों से, इन 13 ईयर्स ऑफ जेनेसिस, हम फर्स्ट पीटीएम करते हैं जून में, जिसमें हम सबको एक एक पेरेंट को मिलते हैं, एक एक मेंटर से मिलते हैं। और ऐसा सेशन हमेशा प्रॉब्ली 3, 4, 5 महीने बाद करता हूं मैं। पहली बार ऐसा हुआ दैट आई फेल्ट द नीड कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट टॉक टू यू इन लेस देन 15 days 10 days। कई बच्चों को भी आते हुए सिर्फ हफ्ता हुए, 10 दिन हुए। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू इज, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, हुआ क्या, अब स्कूल शुरू हुए एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मई में या अपकमिंग 1.5 महीने में एग्जाम है, एम आई राइट? मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में कुछ ना कुछ एग्जाम वगैरह हैं। अब किसी में यूनिट है, किसी में साइकिल है, सब अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी स्कूल यूज करते हैं। कोई टर्म बोलता है, कोई मिड टर्म बोलता है, कोई हाफ मिड टर्म बोलता है, कोई साइकिल, बाईसाइकिल, वॉट एवर दिस सेज। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल की एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट प्लीज अंडरस्टैंड, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड जेन्युइनली, most of the parents said the focus is the overall development of a child. The focus is जो पुराने पाप हैं, the foundation जो वीक हुआ है उसको इंप्रूव करो, मोबाइल टाइम को डिक्रीज करने में हेल्प करो, आगे बच्चे ने क्या करना है उस पे फोकस, उसमें गाइड करने में हेल्प करो। Now how do you expect us to do it when बच्चा बेचारा रोज रोज हमारे को आके एक चीज बोल रहा है टीचर्स को, सर मेरे एग्जाम है, मेरे एग्जाम है, मेरे एग्जाम है। Now as एक बार बिल्कुल न्यूट्रल होके मेरे पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से आके सोचो, एक क्लास में मान लो 10 बच्चे भी हैं सिर्फ, उसमें 10 बच्चे 3 या 4 डिफरेंट स्कूल्स के हैं, हर एक के एग्जाम हैं, किसी के 15 दिन पहले हैं, किसी के 15 दिन बाद हैं, किसी के अगले हफ्ते हैं, किसी के ऑलरेडी चल रहे हैं। ना इस सिचुएशन में अगर हम क्लासरूम टीचिंग को छोड़ के जो हमने प्लान किया है, विच विल कवर एवरीथिंग फॉर विच यू आर एट जेनेसिस, इफ वी स्टार्ट डूइंग दिस एट द मिनिस्क्यूल लेवल, हम रोजमर्रा के एग्जाम में घुस जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन फेयर बच्चे का कि अगर सर मेरे मार्क्स कम आएंगे तो पेरेंट्स कह रहे हैं हम जेनेसिस से हटा लेंगे। तो वी कैन नॉट फंक्शन लाइक दिस। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, प्लीज, इट्स जेन्युइनली फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई एम आस्किंग यू टू प्लीज ट्रस्ट अस। वी वुड, अगर हम 13 साल से कुछ सही कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम आगे भी सही करेंगे, बट वी नीड टाइम, we genuinely need time. I cannot promise you results in less than 4 to 5 months. I'll be very honest with you. And अगर आपको इतने short term results चाहिए तो Genesis is not a place for you. I'm being very honest with you. I'm ready to lose couple of students at this juncture instead of giving you wrong commitments. हमसे ऐसा नहीं हो सकता. I can give you one thing for sure. Whatever your expectations are in terms of building a strong foundation, covering the backlogs, अगर मुझे 9th के बच्चे को imagine या 10th के बच्चे को 7th 8th का मैथ्स वापस करवाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मुझे उसके लिए टाइम चाहिए। मुझे अगर 10th के बच्चे को 9th की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स करवाने हैं जो 10th में लिंक हो रहे हैं, मेरी टीम को उसके लिए टाइम चाहिए। मैं ये इस तलवार के साथ नहीं जी सकते हम लोग। थैंक यू सो मच सर। हम इस तलवार के साथ नहीं जी सकते कि परसों के टेस्ट में अगर नंबर नहीं आते तो हम अगले हफ्ते से जेनेसिस नहीं भेजेंगे। आई एम सो सॉरी, आप अभी कल से मत भेजो, मंडे से मत भेजो यार। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। our plans for your children are pretty solid. We have built, listen to me very carefully, we have built a pack of around 10 to 12 worksheets per subject related to the last 2 years of damage what was done. इसका मतलब है कि अगर एक बच्चा 10th में है तो हमने 8th और 9th का कुछ मटेरियल तैयार किया है जो एक बच्चे को 10th के आना चाहिए
फॉर स्मूथ एंडिंग ऑफ 10th. एंड वो अगर हर सब्जेक्ट की 5 से 7 एवरेज वर्कशीट्स भी हैं सब, तो हाउ मच टाइम यू थिंक वी नीड टू कवर इट? हमें टाइम चाहिए. और अगर जेन्युइनली स्पीकिंग ये डर आपको निकालना है आपके बच्चे के अंदर से कि बच्चे यूनिट टेस्ट में अगर जो सिलेबस आ रहा है थोड़ा ऊपर नीचे भी है, तो हम आपके साथ हैं एज अ पेरेंट. आप अपने एफर्ट सही डायरेक्शन में डालो, हम आपको इवैल्यूएट करेंगे और हम जेनेसिस को इवैल्यूएट करेंगे. हम भी करेंगे बिकॉज वी आर पेइंग देम फीस नॉट बिफोर सितंबर. आई as someone who's heading Genesis, मुझे सितंबर तक का टाइम चाहिए. आप मिड टर्म में रिजल्ट्स देखो. एंड आई अश्योर मोस्ट ऑफ यू, इफ बच्चा हमारे हिसाब से चलेगा, आई गारंटी यू सितंबर एग्जाम्स में जो भी मिड टर्म होंगे इंप्रूवमेंट दिखेगी. अगस्त सितंबर में जो एग्जाम में इंप्रूवमेंट दिखेगी. am I making sense? मतलब अगर आपको मेरी बात में सेंस लग रही है, तो जिन पेरेंट्स को मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, जस्ट नॉड योर हेड. आई थिंक इट विल गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग दैट मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो अब अगर हमें परमानेंट चेंजेस करने हैं, परमानेंट, तो एक चीज जो दुश्मन है इस टाइम पे हम सबकी मिलके, वो ये है, आप सबने वोट में भी किया, और इसको छुड़वाना is a wrong word. इसको लिमिट करना is my number one priority right now. That's why I asked बच्चों को रूम से बाहर निकाल दो, because now I am going to tell you how do we do it practically, how it has to be done. करना कैसे, I'm going to tell you that from my experience. ठीक है? Because if अगर आप बच्चे को genuinely observe करो, I'm sorry to put it this way, if you observe a drug addict and a mobile addict, the symptoms are same. They're absolutely same. Drug addict को आप एक दिन ड्रग नहीं लेने दो, अल्कोहलिक को एक दिन अल्कोहल, तो उसके अंदर एक सिम्टम्स आते हैं रेस्टलेसनेस के, एंजाइटी के. I have seen, and talking to a lot of parents about it, I have seen similar kind of symptoms in the बच्चास when parent उनसे 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए उनको मोबाइल नहीं देता है. We are not moving in the right direction, and we need to control it. I'm going to tell you how. आप सुनने के लिए तैयार हैं? Great. First thing is, बच्चे किसी के साथ तो नहीं है ना अभी? उनको लात मार दो temporarily. Okay, on a serious note. So सबसे पहले, the most important thing is, please understand, this next 3-4 years are the years of your life, of your child. Number 1. Number 2, and for these 4 years, 3 years, whatever age group your child is in, either 10th or 9th, you need to be a very, very okay, I'll put it this way. If you have seen Chak De movie, देखिए आपने Chak De movie, Chak De India? अगर नहीं देखी तो अगर देखिए तो I'll give you reference of Shah Rukh Khan and Chak De. A very, very strict kind of a coach. But if you've not seen, okay, I'll give you a simple example. आप सबका role as a parent should be a strict friend. I'll explain you what does it mean. दोनों words को divide करते हैं, strict and friend. Friend would also, friend is clear word कि बच्चे को हमने इतना. Now I want you to understand this. If you genuinely want this to be decreased, else we'll keep on complaining this 6 months down the line also. सर सारा दिन PUBG खेलता है, Instagram करता है, Snapchat पे streaks भेजता है बच्चा, YouTube पे वीडियोस देखता है, हमारे हाथ से निकल चुका है. अगर आपके हाथ से निकल चुका है तो genuinely हम सब एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं. Okay, coming back. So when I say friend का मतलब है कि हमें उसको इतना कंफर्ट देना है. I repeat, हमने अपने बेटा या बेटी को इतना कंफर्ट देना है कि वो हमसे आके कोई भी बात कर सके. Number 1. And few of the parents also voted कि हमारा अपने बच्चे से कम्युनिकेशन गैप है, मैंने पढ़ा था, है ना? So वो रिमूव होना बहुत जरूरी है. I'll tell you that also how. But for mobile usage, we need to set some ground rules in our family. I'm so sorry. कुछ चीजें आपको ऑफ बीट लग सकती हैं,
कुछ चीजें आपको गुस्सा भी दिला सकती हैं, बट एज आई सेड इन द बिगनिंग, आई एम नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी राइट नाउ, आई एम हियर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. And if and for solving that problem, if one of you or couple of you get offended, I'm so sorry, मैं sorry पहले ही मांग रहा हूँ. Now people, sorry, बच्चा वो बनता है जो वो हमारे अपने घर में एटमॉस्फेयर में देखता है. So as a parent, we have to lead from the front. Now when I say lead from the front, which means if we want to limit their screen time, first we have to limit our own screen time in front of them. And if we can't do it, never ever expect them to do it. वो हो ही नहीं सकता. If I am 35 years of age, if I am 35, if I have this as my weakness, and it is at times, if I am working and WhatsApp is blinking, तो मैं भी distract हो जाता हूँ. Imagine someone who is just 14-15 years of age, whose wisdom is lesser than our wisdom. So how do we do it? We have to set some ground rules. When I say ground rules, so which would mean take your child out for a walk and spend quality time with them. And I say quality time, unko sabse pehle ask them what are their expectations from you as a parent. Unki aapse as a parent kya expectations hai? Now if the relationship between you and your child is pretty good, already pretty good, वो आपको ऑलरेडी आंसर देने शुरू कर देंगे. बट अगर आपको लगता है द रिलेशनशिप इज नॉट दैट स्मूथ बिकॉज ऑफ फ्यू डिफरेंसेस, शायद कभी ऐसे बात ही नहीं की है आपने, यू हैव नेवर इंटरेक्टेड विद देम, तो इट विल टेक टाइम. इट इज नॉट गोइंग टू बी मैजिक कि आपने आज पूछा और आपने लास्ट बात बहुत सालों पहले हुई थी. तो मैम, सर, व्हाट हूएवर इज मैसेजिंग मी पर्सनली राइट नाउ, प्लीज गिव मी सम टाइम. अभी मेरा फ्लो खराब हो जाएगा. आई एम सो सॉरी. अभी आई डोंट वांट टू लिसन टू रीड एनी चैट. प्लीज, आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली. ओके, कमिंग बैक. So it is not going to happen in a day that the relationship will improve, but we have to start somewhere. And the people who say, sir, बच्चा मेरे हाथ से निकल गया है, आपका एक या दो बच्चे हैं, we can't afford कि वो हमसे बात ना करें, especially in these 4, 3, 5 years. We have to make it happen, वो बात करें. Now, so tell them कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ट्राई करो वो आंसर दे इस बात का. And then ask them very clearly, what do you expect from them? I repeat, what do you, as a parent, what do you expect from them? And please, it's my humble request, सिर्फ मार्क्स मत बोलना. It turns off kids completely when parents सिर्फ मार्क्स की बात करता है. And बच्चे हमें आके बताते हैं कि हमारे घर में एक ही कॉन्वर्सेशन होती है, सर मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे, कितने घंटे पढ़ाई की. प्लीज, आई एम नॉट सेइंग ये कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट माई हम्बल रिक्वेस्ट, चेंज द कॉन्वर्सेशन, चेंज अ बिट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. थोड़ी सी और अलग बात करनी बहुत जरूरी है. Not every conversation should be around marks. Not every conversation should be about units. Not every conversation should be about कैसा हुआ टेस्ट. Conversation can be very simple. Are you happy? I'm so sorry. This is not a session on parenting. I'm being very selfish right now. I want my kids, the kids of Genesis, should be nurtured well. I can't nurture them alone without your help. So I'm asking for your help. So ये मैं अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूं. We need to set absolutely clear cut expectations from each other. बच्चे की आपकी, बच्चे की आपसे, आपकी बच्चे से. If these expectations are clear, मैं नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. Because you see, last 12 years I've taught directly into the classroom. From 2009 till 2021, my subject is physics. I directly used to teach. I've personally trained more than 7,000 students. Okay? So I'm sharing all this based upon the experience of a classroom, understanding them. Kids used to love me for it. Even if I'm not teaching, now the kids who have met me once or twice, they have become comfortable to me.
but they should have met me at least once or twice. So now when I say clear expectations, उस expectation में आपने एक expectation रखनी है as a parent, and that will only happen जब उसकी सुन चुके हैं that बच्चे mobile is not going to be with you once you are back from coaching. It is not going to be with you. We have to change how we are working. मैंने पहले भी बताया कई बार, जिन पेरेंट ने मुझे पहले सुना हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करना. Now we need to set up time. For example, you want that कि मुझे अपने बच्चे को beyond school and beyond coaching, ठीक है, इन दोनों टाइम में तो वो ऑब्वियसली मोबाइल यूज नहीं कर सकता. जब मेरे पास आ रहा है तो भी नहीं कर सकता, स्कूल में अलाउड नहीं है. इसके अलावा यू सेट अप एज अ टाइम कि ओके बच्चे मोबाइल यूज करना जरूरी है. वी कैन नॉट, हम बैन नहीं कर सकते, घर से ले नहीं सकते, बिकॉज एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, एवरीबडी इज यूजिंग इट. सो लेट्स फिक्स अप अ टाइम ऑफ प्रोबेबली not more than 1.5 hours in a day, not more than 1.5 hours in a day. That should be mutually clear. आप उसको 1 hour करना चाहते हो वो आपकी मर्जी, आप 1.25 घंटा करना चाहते हो आपकी मर्जी. I feel 1.5 hours is sufficient for a child of this age to use. Now, अब 1.5 hours पे पहले उससे म्यूचुअली एग्रीमेंट ले लो कि बच्चे यार देख बेटा, वट एवर आप जैसे भी अपने बच्चे से बात करते हो कि यार देख 1.5 घंटा यूज करना तेरे को अलाउड है. नाउ वो जो 1.5 घंटा है, अब वो 1.5 घंटा हम डिफाइन करेंगे, वो रैंडम नहीं होगा, वो डिफाइंड 1.5 आवर होगा. अब इट कुड बी इन द, आइडली इट शुड बी इन अ ब्लॉक ऑफ 2 टाइम जोन्स, 45 मिनट ईच. आप सब मेरे साथ हैं? सो तो नहीं गए? ओके, 45 मिनट ईच स्लॉट. मतलब प्रॉब्ली जनरली जैसे मैंने बच्चों से बात करी, मुझे एक्सपीरियंस से, बच्चे जनरली स्कूल से आते ही मोबाइल पे टूट पड़ते हैं, बिकॉज 6 घंटे से दूर है बेचारे, 6-7 घंटे से दूर है. और दूसरा, कोचिंग से जाने के बाद उनको चाहिए कि ओके, उनकी अलग ही चौड़ होती है जब बच्चा कोचिंग से आता है कि बहुत पढ़ के आया हूं मैं, अब डिस्टर्ब मत करना मुझे थोड़ी देर के लिए, और पढ़ने के लिए तो बिल्कुल मत बोल देना. सो लेट्स रिस्पेक्ट दोस टाइम जोन्स. Once he or she has come from school, don't expect कि वो आपसे आके बातें करेगा, धीरे धीरे उसको भी शॉर्ट करेंगे. 45 मिनट सब दे दिए. अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, जब वो बेचारा वो 45 मिनट्स डिफाइंड है अगर आपके कि 3 से 3:45 या 2:30 से 3:15, जो भी आपने डिस्कस कर लिया, उस टाइम पे प्लीज डोंट इंटरफेयर. थोड़ी सी स्पेस दे दो उसको कि ओके 45 मिनट डिफाइंड, यूज इट नाउ. उस 45 मिनट्स में डोंट गेट क्या कर रहा है, क्या कर रही है, नहीं सारा दिन मोबाइल में. उस टाइम पे लेट्स, अगर सेट कर लिया ग्राउंड रूल 45 मिनट्स, ओके रिस्पेक्ट. एक बार आप उसको रिस्पेक्ट दो तो आपकी वो रिस्पेक्ट भी करेगा. 45 मिनट जैसे होंगे, इतना हमें डंडा होना चाहिए प्यार वाला कि वो मोबाइल वापस रख दे. उसके बाद क्लासेस पे आता है, घर वापस जाता है, अगेन 45 मिनट्स, दैट्स इट. वंस दीस 45 मिनट्स स्लॉट्स आर डन, 2 बार मोबाइल, आई रिपीट, मोबाइल किसके पास होना चाहिए? उसकी जुरिडिक्शन में मोबाइल नहीं होना चाहिए. इसके लिए अगर घर में 1 बार 2 बार 3 बार स्टार्टिंग में, हम इसको पंजाबी में से कलेश वर्ड बोलते हैं ना, हो जाए तो कर लो. डिफाइन 1.5 hour, break it down for your child, and during that 1.5 hour you promise to yourself, even if you don't like what he or she is doing, you will not interfere. But after that 1.5 hour, he or she will not carry the mobile. ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा जो बोलता है मैं मोबाइल के साथ पढ़ता हूं वो पढ़ ले. इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है. अब बच्चे जो एक्सक्यूज देते हैं, मेरा होमवर्क मोबाइल पे आया है, मुझे ऑनलाइन डाउट देखने होते हैं, मुझे कोई वीडियो देखनी होती है, नॉट अलाउड. सब कुछ बुक्स में है. हुआ है ये कि मोबाइल यूजेज से, लैपटॉप यूजेज से बच्चों ने बुक्स पढ़नी छोड़ दी हैं. दे वुड गूगल एवरीथिंग टू गेट करेक्ट आंसर्स फटाफट से. दैट्स व्हाई दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग विद वीक फाउंडेशंस. Even if they'll score well, but they have a weak foundation for the future. No, I repeat, not allowed. 1.5 घंटा उसका, बाकी पूरा टाइम आपका. और क्या आपको लगता है when we'll start this, will it happen very easily? The answer is no.
क्योंकि the feel of having a continuous what do we say word, continuous availability of mobile to them, and you're taking it from them and they have to take from you now. You see, the role has changed. हम क्या करते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ते वक्त मोबाइल मुझे दे दे, अब ऐसा नहीं करना. Listen to me what I'm saying. I'm completely changing the strategy. मोबाइल आपको मिलेगा नहीं बच्चा. मोबाइल आपको, अगर आपने अपने बच्चों को पर्सनल मोबाइल लेके भी दे दिया, ग्रेट, आपने लेके दिया, they have not earned it. None of the child has earned it. Am I right? They're not earning right now. वो आपकी देन है. अगर आप लेके दे सकते हो, आप वापस ले सकते हो. देना है दिन में 2 बार, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 45 मिनट ईच स्लॉट. उस टाइम पे आप नहीं मांगोगे, उसके अलावा उनके पास होना नहीं चाहिए. If you can do it, you will start seeing the transformation in next 7 days. 7 days. But for this to happen, प्यार वाला डंडा उठाना पड़ेगा. Please start spending time with them. Start talking to them. If you, whenever you have time, आधा घंटा 15 मिनट, जब भी, I'm sure a lot of you would be busy in your schedules. I have no idea about your schedules, but I'm telling you, the kids need you emotionally. This age, they are completely lost in their lives. उनको पता ही नहीं है, बेचारों का बेस हिल गया है, आदत मोबाइल्स की पड़ गई है. अच्छे अच्छे बच्चे बेचारे जो फंडामेंटली वैसे स्ट्रांग हैं, they have everything, every privilege, but they're not clear. They're not thinking clearly from here, and that is because a lot of that is because of the एकदम से ना एक्सपोजर बहुत मिल गया लास्ट 2 सालों में मोबाइल यूजेज का, लैपटॉप्स का, इंटरनेट का. जो एक्सपोजर प्रॉब्ली 11th-12th के बाद मिलता है, वो उनको 6th 7th 8th 9th में मिल गया. उससे किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है. वो हुआ वही है. Can I expect that? Is it going to be tough to implement this strategy? It is going to be tough. Trust me on this. अभी आप एग्री कर रहे हो, बट मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन टफ होगा. अगर आप लोग करा पाओगे इम्प्लीमेंटेशन, ऑल ऑफ यू, तो आई थिंक फिर तो मजा आ जाएगा. हल्का सा टफ होगा, बट होगा. पता है अगर आप अड़ जाओगे ना इस बात पे, मतलब लेट्स मेक इट अ नॉन नेगोशिएबल रूल इन योर फैमिली. अगर उनको, बच्चा बहुत स्मार्ट है, वो इतना इंटेलिजेंट है ना, आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड दिस. ही नोज कि मेरे मदर और फादर का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है ना. वो आपको इमोशनली, आई हैव अ 7-year-old सन, ही नोज माय ब्रेकिंग पॉइंट. ठीक, वो I have a 7-year-old son, yours is 14-15 years old, है ना. So depending upon child to child, I think, है ना, you would understand it. So वहां पे जब वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना, उस पर ब्रेक मत हो कि यार नहीं, ये हमारे रूल ही नहीं है, खत्म हो गए, दिस इज डन, ये नहीं होगा. तेरे नंबर कम आ जाए ना, यू सी हाउ डू वी हैव टू विन देम. तेरे नंबर कम आ जाए, इट्स ओके, वी आर विद यू. हो सकता है आपको बच्चे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा, मैं let them do. वो आपको ये भी बोल सकते हैं, because I've heard people, बच्चे ये बोलते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं जेनेसिस नहीं जाऊंगा. अच्छी बात है, कोई चक्कर नहीं, आराम कर, घर आराम. यही 1.5 घंटा मिलेगा मेरे बच्चे. 2 दिन पेशेंस रखो, तीसरे चौथे दिन आपको रिजल्ट, अगर आप अड़े रह गए, तीसरे चौथे दिन आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव दिखने शुरू हो जाएंगे कि बच्चा ये, अच्छा चलो 1.5 घंटे के लिए दे दो. That's how things will work. Once we have to apply, but when you are committing that कि मार्क्स के लिए प्रेशर नहीं डालोगे स्टार्टिंग फर्स्ट 5-6 months में, then please stick by it. Let's stick by the word. और अगर आपको लगता है, great, the people, some of you are all doing it, that's absolutely great. अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे पेरेंट हो, हर एक पेरेंट डिफरेंट है, ठीक है, कि जो 10 में से 9, 9.5 नंबर अगर आते हैं और आधा नंबर कटता है, उसके लिए भी उसको डांटते हो, तो आपसे ना हो पाएगा ये. तो आप पहले ही ऐसी कमिटमेंट मत करना जिसपे आप बैक ट्रैक करो, बिकॉज वंस वी बैक ट्रैक द कमिटमेंट गिवन टू द चाइल्ड, वी लूज आवर रिस्पेक्ट, एंड किड्स डोंट फॉलो पीपल हु दे डोंट रिस्पेक्ट. अब मैं रिपीट कर रहा हूं ये चीज, बच्चे उन लोगों की इज्जत, उनकी बात कभी नहीं सुनेंगे जिनकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड लव. आपका बच्चा आपसे प्यार जरूर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. आपका बच्चा आपकी इज्जत नहीं करेगा अगर हम वो जो बोलते हैं हम उसको अबाइड नहीं करते हैं, और बिना इज्जत वालों के वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे.
एंड सिमिलरली द सेम सिमिलर काइंड ऑफ रूल अप्लाइज टू यू आल्सो. अगर बच्चा आपके साथ बैठ के रात को 9 बजे बात कर रहा है और आप अपने साथ साथ व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो और उसको खड़ जा, नॉट एक्सेप्टेबल. कीप दैट यू फॉर यू आल्सो. यू लीड फ्रॉम द फ्रंट. देन rules should be not for just for a 14-15-year-old. Rules should be the family rules. मुश्किल हमें भी होगी, मतलब बिकॉज आदत है ना 24 घंटे स्क्रॉलिंग करने की, हमें भी तो पड़ गई है. तो उनको हमारे को, और जितने हम एज में बड़े होते हैं, यू वुड अंडरस्टैंड इट, द मोर ग्रोन अप वी आर, मोर डिफिकल्ट इट इज टू चेंज आवर हैबिट्स. एम आई राइट? सो हमारा भी बैंड बजेगा, बट अगेन फॉर देम इट इज वर्थ इट. Am I clear? Any doubt till this point? You can send me on chat. मैं 30 seconds का break ले रहा हूँ पानी पीने की. So many questions on the chart. Great. अब हम systematically इस चीज को implement करते हैं. ठीक है? Lastly, now how would we go about it? I've just shared it with you in the beginning. If someone has joined late, we have built a certain curriculum. We have redesigned our curriculums for the classes, for the batches. In addition to the school, what we are doing, we'll also cover some fundamentals which were lost because of the online studies in last couple of years. And we'll try to cover things which are going to be, I'll say, bridge for the future. So that will happen. That has already started to happen, but it will take time to actually tell you more confidently कि sir, it has been done. बच्चे का पुराने पाप मोस्टली धुल चुके हैं. It is going to take time for us, and for that you need to give us a bit of trust, that we trust you for 5-6 months. See our performances. We would love, you see, it's a very highly competitive business, I understand, and we are answerable to you. My team is accountable to you. We are answerable to you, and we are not afraid of being accountable. We are, but the only thing is it takes time to build something good and great. आप सिर्फ घर पे कंट्रोल करो चीजों को, जैसे मैंने आपको बताया. हम अब जैसे हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं 9th-10th के बच्चे को. डर रहे हैं, टीचर डर रहे हैं, बिकॉज बच्चा काफी एक गाना गाता है हमारे पास आके. मैं गाना आपको सुनाता हूँ कि बहुत थक जाते हैं सर, बहुत बर्डन है, एंड ऑल एंड वी रिस्पेक्ट दैट. व्हाई? बर्डन इतना ही था. इन लास्ट 5-6 years वी हैव बीन फॉलोइंग द सिमिलर शेड्यूल जो हम इस साल फॉलो कर रहे हैं. But never we have got so many complaints from the children and parents कि आपका schedule बहुत hectic है as compared to maybe others. Because इसमें आपकी भी गलती नहीं है. Because हुआ क्या है, 2 साल बच्चे को इतना effort physically mentally occupy रहने की आदत नहीं रही, and वो online exam में बेचारे इतने comfortable हो गए थे बुक खोल के एग्जाम देने में. अब सडनली उनको लग रहा है कि मई में मेरे एग्जाम्स आ गए हैं और मुझे पढ़ के देने पड़ेंगे, और मैं पूरा एक्सपोज होने वाला हूँ घर वालों के सामने कि बच्चे जो 9th के मार्क्स आए हैं, जो 8th के मार्क्स आए हैं ऑनलाइन देके, वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और अब जो आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे. तो प्लीज पैनिक मत करना अगर बच्चों के थोड़े बहुत नंबर कम आ जाए. अपने जो आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं उस पोल में, उसको हमेशा याद रखना कि फोकस इज ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट विल टेक सम टाइम, नॉट बहुत सारा, बट सम टाइम, and will definitely, I promise you, will give you results. Am I clear? And before I close, last thing I want to show it to you, and then we'll close down. There is an equation which I want, some of you have already known it, but एक equation मैं आपके साथ share कर रहा हूँ. आप इस equation को please Genesis में जब तक हमारे साथ हो इसको याद रखें. Can you see my screen? Great. So the equation to be remembered, you can note it down if you want to. This is the equation. मैं आपको explain करता हूँ डिटेल में. एक बार आप पढ़ लीजिए इक्वेशन को. If you can see my screen clearly, the stress of a child is equal to the pressure upon divided by inner power of the child. आप नोट भी कर सकते हैं. This is going to help you. Stress is equal to pressure upon inner power. Now there's a last line at the bottom of it. You can read it. Greater the stress level, lesser is the probability of a child achieving his or her goals. मैं explain करता हूँ उसको डिटेल में. What does it mean? Lastly,
this is the last segment of the session. Now, when I say the stress level of a child is equal to the pressure upon inner power of the child, what does it mean? Now listen to me. कि जो स्ट्रेस होगा एक टीनेजर को, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, मैं आपको इसको बिल्कुल एज अ लेमैन, एज अ टीचर समझाता हूँ. जो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस होगा वो दो फैक्टर्स पे, दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहला प्रेशर, दूसरा उसकी खुद की पावर, इंटरनल पावर. तो मैंने से अब आई थिंक ये सबको क्लियर है कि प्रेशर और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इतना तो मैथ्स हमें सबको 8, 7, 9 का याद होगा अपने टाइम पे. प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनर पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो व्हेन आई से इनर पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुल. अगर हम बच्चे के ऊपर स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो हमें उसकी इनर पावर बढ़ानी है. ये क्लियर है? ये मैथ समझ आता है हम सबको? अगर मुझे उसका मेंटल स्ट्रेस कम करना है तो मुझे उसकी इनर पावर को बढ़ाना है. नाउ हाउ डू वी डू इट? वी कैन नॉट इंक्रीज द इनर पावर ऑफ अ चाइल्ड बाय कॉन्टिन्यूअस कंपैरिजंस. In fact, it becomes other ways. When we do comparisons, उसका किसी और के साथ, बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, बेबी अपने साथ, हम अक्सर अपने बच्चों को बोल देते हैं कि यार तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिली हुई है, हम तो लैंप के नीचे पढ़ते थे, हमें तो हमारे घर फैसिलिटीज नहीं थी. And that's a very normal conversation happening, I think. So trust me, I'll be very honest, trust me, it is not helping them. हमें लगता है हम उनको नेगेटिव मोटिवेशन दे रहे हैं. ऐसा नहीं है, ये बच्चे डिफरेंट है. नेगेटिव मोटिवेशन से बिल्कुल नहीं चलते. एट टाइम्स हम पीटीएम पे भी जाते हैं तो हम उनके स्कोर से ज्यादा उनके फ्रेंड के स्कोर में इंटरेस्टेड होते हैं, टॉपर के स्कोर में इंटरेस्टेड होते हैं. आई थिंक लेट्स हैव वन पर्पस, बच्चे को उसके लेवल से इंप्रूव करना. मतलब जेनेसिस में मेरी विजन यही है अपने बच्चों के लिए, जो बच्चा जिस लेवल पे जेनेसिस ज्वाइन कर रहा है हमें उसको उस लेवल से ऊपर लेके जाना. अब वो लेवल अगर 70 है तो उसको 80 लेके जाना है, फिर ऊपर लेके जाना है. अगर ऑलरेडी 90 है तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेके जाना है. अगर 50 है तो 65 पे लेके जाना है. 50 को मैं 90 से कंपेयर करूंगा तो कैसे चलेगा? एज अ पेरेंट, अगर हम लोग उसकी एज अ मेंटर एंड अ पेरेंट, इफ हम उनकी इनर पावर को इंक्रीज अगर कर जाते हैं मिलके, तो हमारे बच्चे धूम मचा देंगे करियर्स में. ट्रस्ट मी ऑन दिस, दे विल डू वेल. बट अगर हम बिकॉज ऑफ द सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड देम, ऑलरेडी बच्चों की इनर पावर बहुत वीक है. आप देखो बच्चे कभी, मतलब व्हेन वी वर यंग, व्हेन आई वाज इन दिस एज और यू वर इन 9th 10th, कभी हम लोग सुनते थे ये बातें, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन? मतलब थिंक अबाउट, ये कितना कॉमन वर्ड हो गया, मतलब आप सोच नहीं सकते. बट हमारे टाइम पे व्हेन वी वर ऑन दिस एज, आई थिंक I have never, मतलब I don't remember in my childhood, मतलब my teenage, ever hearing this word in कि मेरे किसी बैचमेट को, क्लासमेट को एंजाइटी अटैक्स होते हैं, उसको 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 डिप्रेशन है, वो डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को कंसर्न कर रहा है. and now it's become very common. Why? Because the inner power is already very very low. I call it shallow. बच्चे बेचारे shallow हो गए, उनको भरना है. एंड वो कंपैरिजन से नहीं, वो आपके प्यार से, स्ट्रिक्ट वाला प्यार, मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्ट लव से भरे. एंड स्ट्रिक्ट लव मींस जहां उनको अकाउंटेबल बनाना है वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि भैया ये नॉन नेगोशिएबल है. बट जहां उनको थोड़ी सी फ्रीडम, स्पेस और अंडरस्टैंड करना है कि टाइम बदल गया है, इट्स ओके टू हैव फ्रेंड्स, इट्स ओके फॉर किड्स टू टॉक टू द पीपल, द किड्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर. वी नीड टू बी एक्सेप्टेड, वी नीड टू हैव एक्सेप्टेंस टू दीज थिंग्स. वहां पे थोड़ा सा हमें भी खुले विचारों का होना जरूरी. कई मुझे घूर रहे हैं, बट मैं क्या करूं, मैं ऐसे गलत नहीं गाइड कर सकता आप लोगों को. कईयों को बस चले स्क्रीन से घुस के मुक्का मारे, बट आई कांट गाइड यू रॉन्ग. आई अंडरस्टैंड दिस किड्स बेटर देन, ट्रस्ट मी, देन एनीवन ऑफ यू. they can be driven, they can be motivated,
but we have to lead from the front. We have to inspire them by our action, not just by our words. We have to genuinely support them, but have clear-cut expectations from each other, and tell them that it's okay if you score less, but it's not okay if you don't study. You see, there is a difference. तूने effort डाला, तूने पढ़ाई करके गया, तूने seriously exams दिए, ये चाहिए. 2, 4, 5, 7, 10 नंबर ऊपर नीचे हो जाएं, it's okay, we are with you as a parent. But tell them one more thing. यहाँ पे मुझे आपकी support चाहिए होगा. Ask them not to cheat in the exams. ये freedom उनको आप दोगे, और ये पता कब मिलेगी? जब आप उनको नंबरों के बजाय उनके प्रोसेस के लिए इंस्पायर करो कि मुझे रूटीन चाहिए बच्चे, मुझे रूटीन चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि तू रूटीन में पढ़ रहा है. तेरे 4-5 नंबर कम आ जाएंगे, इट्स ओके. अगर तू 20 में से 14 नंबर ला रहा है और तू मुझे बोल रहा है 14 मेरे हैं और मुझे पता है मेरे 6 नंबर क्यों कटे हैं, तो आई सपोर्ट यू. डोंट, मतलब I'll not say we never guide them to cheat, but why do they cheat in tests? Because they know कि अगर 14 नंबर आएंगे तो 76 पढ़ेंगे, 18 नंबर आएंगे तो पीठ थपथपाई जाएगी, 19 पे और प्यार मिलेगा, 20 पे चॉकलेट मिलेगी, या 20 पे लगेगा मजा आ गया. तो वो 18 वाला बच्चा 20 लाने के लिए 2 नंबर की चीटिंग करेगा, 14 वाला 4 नंबर लाने की चीटिंग करेगा, जो 6 नंबर ला रहा है वो 2 नंबर 4 नंबर और लाने के लिए चीटिंग करेगा, बिकॉज उसको आपसे डर है. वो डर निकाल दो, एग्जाम्स के रिजल्ट का डर निकाल दो. मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, इन ऑल द वर्कशॉप्स आई डू फॉर लॉट ऑफ स्कूल्स ऑल्सो, प्रेशर प्रिपरेशन के दौरान लेना है. प्रिपरेशन के दौरान, प्रेशर एग्जाम करते हुए नहीं लेना. बहुत फर्क है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, कई लोग लिख रहे हैं क्यों. प्रेशर लेना है, गुड प्रेशर बहुत जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन कब? अब जब मैं आपका आज आई थिंक 90% ऑफ यू को आज मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो एंड आई हैव डन मोर देन 500 वर्कशॉप्स इन लास्ट 10-12 इयर्स, ठीक है. तो जब 6:30 मैंने को रियलाइज किया कि आज मेरी वर्कशॉप है, तो मैं खुद भी थोड़ा सा हुआ कि इतनी जल्दी कभी वर्कशॉप की नहीं है नए सेशन के लिए, नए बैचेस के लिए. तो आई वाज आल्सो नर्वस, बट इट वाज अ गुड प्रेशर, and it was there till the time I said you good evening everyone, will start in next 3-4 minutes, तब तक था. But when I started to deliver this, मैं भूल गया कि आप मुझे जज कर रहे हो, आप बोलोगे ये क्या पागल आदमी जेनेसिस चला रहा है या whatever. I have not bothered about it from last I don't know 45-50 minutes हम लोग बात कर रहे हैं, I think पता भी नहीं लगा, मतलब 52 minutes से the session is on. So tell them the same thing. Pressure लो, पेपर आ रहा है, 3 दिन रह गए, वो प्रेशर लेना जरूरी है कि पढ़ना है, आई हैव टू यूटिलाइज माय टाइम. Once you have stepped into the examination hall, no pressure. बेस्ट करके आना है, that's it. हम संभाल लेंगे बच्चे. I want this to be the conversation in your families. कर पाएंगे? कर पाएंगे? My and off lately last 2 years we have changed the tagline of Genesis. I'll share the tagline for Genesis with all of you. You should know कि हमारी family किस चीज पे काम कर रही है. This is for the children. I'm sharing it. मैं लिख रहा हूँ. अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको सबके साथ शेयर करना. This is what we stand for. This is what we strongly believe in. In last 2 years I have evolved. मतलब पहले तो this is what. So we'll do lot of quizzes, lot of games, lot of seminars. ऐसे आपके साथ मैं भी जुड़ा रहूंगा. Since we have 3 branches, तो हो सकता है ऑफलाइन सेमिनार्स, पीटीएम्स पे मैं जब भी जिस भी ब्रांच में पीटीएम होगी, you would meet me directly. I assure you ऑफलाइन पीटीएम में मैं आपको मिलूंगा. I'll do lot of session like this online. Please attend करना. I hope I have added value to you. अब किसी ने मुझे डांटना है तो मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ मुझे डांटने की. Now you can unmute yourself and talk to me. I've given you the permission. Okay, I think I've tried my best to, and I was trying to be as honest as I could be. This is the purpose. This is the reason why I started Genesis in 2009, and this is the same reason I am in front of you after 13 years of establishing it. The COVID was very tough for our business, but we are trying to bounce back, and with the support and love of all of you, I think we'll bounce back very soon.
Anything else you want to say? Sir, your strategy is very good, and we are with you. And there's not a this tough task for us regarding this mobile and other things. And I'm very familiar with my kids. Thank you. That is awesome, sir. Thank you so much, sir, for the appreciation. And it's so good to hear that parents are friendlier with their kids. And जहाँ डंडा उठाना है वो डंडा उठा लेना और No, जहाँ there is no need for like that's that. even better. अगर डंडा उठाने की जरूरत ही नहीं है तो it's even better, sir. That's good. किसके पेरेंट है सर आप? Nandika God. Sorry, sir. Nandika God. Nandika. Nandika. Okay, okay. Yes. Great, great. Anything else? I think I should Yeah, close. I also wanted to say something. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, I can understand your stress because I'm also a teacher, so I know it's very difficult to understand children after this COVID. And my daughter is also first time going to tuition after 2 years, and so I'm asking her all the time that I don't care about number. I want your understanding, your point of view, and your social circle should be open because she has anxiety, social anxiety. When I give her this class to go there, so she had a social anxiety. So I think कि मुझे ऐसा लगता है कि number is not important this time. Thank you so much for adding to what I always say. Numbers उतने important नहीं इतना हम लोग इस एज में बना लेते हैं. But attitude and mindset is very important. बच्चों को 2 साल खो दिए उन्होंने अपनी जिंदगी की जिंदगी होती क्या है. So I can explain it better. But sometimes बच्चे ब्लॉक करते हैं. वो आपके पास कुछ और बोलेंगे, हमारे पास कुछ और बोलेंगे. मैंने तब मैम लाइक शी सेड कि हम बहुत एंजाइटी कर रहे हैं, हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो हम थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं. हमारा बच्चा बहुत थक जा रहा है. True. मैंने उसको जैसे कई बच्चों ने छोड़ दिया जेनेसिस एक वीक के बाद ही जैसे शुरू में स्टार्ट किया तो शी सेड कि दिस मैं नो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू आर गोइंग टू स्कूल एंड गोइंग टू जेनेसिस एंड यू आर वेरी एग्जॉस्टेड but I'm not concerned about your study. I'm concerned about your stamina. You're right. So you can take that much time outside your house, so you can talk to people, you can listen to them. That is also your strength. I try my best. I don't know what will be the result. I'm giving my best to my child. So I expect from other parents also. कि इन 2 सालों में बच्चों ने नंबर नहीं अपनी जिंदगी का बहुत कुछ खोया है. So don't think about कि वो एक दिन में नंबर लाएंगे. I don't think so. Thank you so much for adding so much. They will do their best when time will show it. Thank you so much. Thank you. So what we will do is so हम अब in addition to what we are thinking, हम एक parents community build कर रहे हैं. Okay. Now this is for the first time we will be doing it. I've planned to do it from last couple of years, but बन नहीं पा रही थी बात. But now this year, in the month of first week of May, we'll build a different WhatsApp group for all the parents and me and couple of other senior teachers, where we'll once in a week we'll discuss whatever are the concerns, what are the expectations mutually, and what if you feel that as an organization हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम कुछ better कर सकते हैं, so please, we would love to probably listen to you, hear from your advice, because I always say the game has just begun, and I'm very keen on building world-class centers for the students, जहाँ पे उनको लगे ये हमारा दूसरा घर है, not just a मतलब I'm so sorry to put it this way, I just don't want to build just a professional setup कि बच्चे को आगे लगे कि मैं एक मशीनी दुनिया में आ गया हूँ. An extension of home I want to build where they can come, learn, have fun in a very simple manner. So for that to happen, we'll make a WhatsApp group, a community, and we'll keep on doing these kind of sessions, and we'll take your inputs to build Genesis a better place for the children. Would you like to be a part of such community? Yeah, very well. Yeah, yes, definitely. Very good for us also. Great. So that एक दूसरे से parents हम they learn with the fun, then there is no problem. जी sir. I think so. So it's 1 hour. Thank you so much for giving time on Saturday evening. I hope I've not spoiled your. I'm glad कि इस time electricity not at all. Thank you so much. sir. Have a great day.
Okay, You sir. can, Thank you. if Thank you. ever you want to talk to me, you can call any of the Genesis number and you can say कि साहिल sir से connect कर दो. They'll give you sure any time, and I'll be there to assist you. Okay, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Rajesh. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you, sir.